um, it is somewhere or the other trying to bring you to a situation wherein it gives you some or the other kind of a stress. Now, this is a very commonly used word for us, and that is called as stress. So, today, therefore, we thought to talk to you all about a topic called as converting stress to smile. How is it that we can convert our all the stress that we have every day into a beautiful smile in our life? So, talking about it, first of all, we start up with, I hope everybody is able to see our screen. Okay. So, the first thing that we see why we have a stress within us is urgency addiction. Some or the other way we are finding that we are addicted to new things. Nowadays, it's a trend of reels going on. So we are connected to social media, but we are addicted to making reels, posting them, getting appreciation, and many more such things. But in these things comes up and concept of interpersonal conflicts. Now, when we say interpersonal conflicts, one of the thing is wherein you have an intrapersonal, a fight within yourself. And the other is when you have conflict with the other person. It might be a family, your friends. Now, actually, it was observed that lots of families broke down in this particular period of lockdown because somehow or the other they were finding it very difficult to cope up with each other. सुबह सुबह घर से निकल जाओ यार, टेंशन नहीं, झगड़ा नहीं, शांति है. रात को आओ, खाओ पियो, सो जाओ. जिसको जो चाहिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई. बट अब जब घर पे रहना है 24 घंटा एक दूसरे के साथ, became a stressful thing. Managing things with our friends, managing things with our colleagues was becoming another level of stressful attitude. And then comes a bigger picture which gives us a bigger level of stress, and that is multitasking. See, our human brain is devised in such a way wherein you can work with a limited capacity. You can't go extremely out of your level and try to do multiple things. But now if you see, while I'm talking to you, you people attending the lecture online, at the same point of time, before your eyes, you might be having a television set which is having amazing shows going on. You would be having another phone of yours which you would be using and seeing Instagram, Facebook and multiple things there. Your parents might be there saying you something, do this, do that, सुनते सुनते ये तो कर ले, वो तो कर ले, ये कर ले. और आपके मन में चल रहा होगा यार जीवन में क्या कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग ले लिया है, कॉलेज में एडमिशन हो गया है, कर क्या रहा हूँ मैं. बट बेसिकली हम एक साथ में मल्टीटास्क करते हैं और कहीं ना कहीं दिस एक्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एड्स अप टू द स्ट्रेस इन आवर लाइफ. Not just that, we have got unrealistic targets. See, there is a person who has a caliber. Everybody's caliber might be different. देखिए, एक व्यक्ति का बिहेवियर बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा, बट हो सकता है उसके अंदर कोई हटके टैलेंट ना हो. बट एक व्यक्ति होगा जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, बट उस व्यक्ति के टैलेंट के साथ साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके बात करने के तरीके में ना वो हमेशा सरकास्टिक होता है, वो हमेशा किसी ना किसी का मजाक उड़ाता है. नाउ what do is we try to idolize people. Everybody is not a package. हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है और कुछ कमियां होती है. Now when we are the ones, we need to know हमसे अच्छा अपने आप को कोई नहीं जान सकता. अगर हम टारगेट सेट कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए what is the place where I can reach out to, and then set your targets accordingly. But what do is we set some target observing others. Oh, he has done it, that person has done it, they have done it, then why can't I do it? And it becomes an unrealistic target. See, everybody cannot be Priyanka Chopra. But Priyanka Chopra, if she had thought that everybody cannot be Hema Malini, she couldn't have come to the field. So yeah, fine. Everybody cannot be sitting at the position of Mr. Donald Trump, who is the former president of United States of America. He was a businessman and multiple things, and then today he also resigned as the president of United States of America. But at the same point of time, we need to know setting realistic targets for us would be helpful in leading our lives. But then comes over here a situation of unhealthy competition. कंपटीशन सब करना चाहते हैं. अगर हम घर में रहते हैं, हर व्यक्ति, दो बच्चे ही आपस में कम्पीट करते हैं. आइसक्रीम खा रहे तो उसमें कंपटीशन होता है, करियर चॉइसेस है तो उसमें कंपटीशन है, लाइफ पार्टनर चूज करे तो उसमें कंपटीशन है,
1 minute. Just a minute. Okay. Can you hear me now? Alright, okay. Yeah, so we were discussing about this point called as unhealthy competition. Now, when we see this unhealthy competition, I was saying that we also have competition in the cell phones that we carry. इसके पास वो फोन है, मेरे पास ये फोन है. ओ, उसके पास बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल है, मेरे पास तो बहुत ही खराब सी लाइफस्टाइल है. There is some issue with this ID. Which ID? TE. Just speak on it. Again, it's getting mute. Someone is muting them. Is it like somebody is muting on this ID? Who's in T1 T, na? हाँ, T. I'll just call that. T kind. Okay. Alright, anyways. I hope there won't be an issue now. Okay, alright. Okay. Please let me know if I get mute again. So, here we are talking about the topic of unhealthy competition. So, when we say unhealthy competition, it might be something that is out of your reach and you try to compete. Like, today's time, it is so much of social going on. That is, we want to show the best of us. Like when I'm talking to you, you're not interested in what I am talking to you. You might be having your interest in what is there in the background. Oh, that's just a curtain. People like beautiful things which pleases to their eyes. And similarly, there is a competition for everything. There might be people who are competing with the actors and actresses saying that wow, they have worn such kind of dresses, even we want to wear such kind of beautiful dresses. उन्होंने इतनी अच्छी कार ली है, हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए. So ये जो unhealthy competition होता है अपनी लाइफ में, ये बहुत ही खराब होता है. हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो चीजें मिलती है वो उनके डेस्टिनी के हिसाब से मिलती है. बट यस, वी शुड मेंटेन पीस. समय से पहले और समय के बाद आपको कुछ नहीं मिलता, समय पे ही मिलता है सब कुछ. And then also a biggest problem today, especially in this COVID time, is long working days and job stress. For you kids, it's the study stress. आप बोलोगे मिस क्या स्ट्रेस है, घर पे ही तो बैठे हैं, क्या टेंशन है. टीचर्स सोचेंगे ऐसा, बट बेटा स्टूडेंट्स को पहले एक एनवायरनमेंट मिलता था जहाँ पर क्लासरूम में हम बैठ के सीख रहे हैं, टीचर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. अब वही चीज जो पहले 5 घंटे में होती थी वो 10 घंटे करनी पड़ती है, डबल द वर्किंग आवर्स. डेज में सैटरडे, आज सैटरडे है, स्टिल वी आर वर्किंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग दैट पाइल्स अप टू द स्ट्रेस ऑन अस. कि लंबे लंबे समय तक काम करना है, वीकेंड्स पे भी छुट्टियां नहीं होती है, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस ऑल पाइल्स अप टू स्ट्रेस बिकॉज वी स्टार्ट एन आउटबर्स्ट. मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं वो गुस्सा जो पाइल्ड अप होता है वो आप पे पोर आउट करना स्टार्ट करती हूँ. नाउ व्हेन वी से स्ट्रेस, इट इज बेसिकली द साइलेंट किलर. You can see in this first image over here how this person is blocked. वो पूरी तरह से दबा हुआ है स्ट्रेस के नीचे and he needs to de-stress. Okay. So this person needs to de-stress. And how do you think this person can de-stress? That is the reason why we are here. We are discussing about this topic here. Okay. So here we see the mechanism of our mind, because when we say that we have a stress that is going on within us, somewhere or the other it is a built up procedure of our mind. Somewhere or the other the mind is playing a role here. Now when we say the mechanism of mind which comes into picture, first of all we have the intelligence. We should take decisions using our intelligence.
Why so? See, now when we see the mind, it is a storehouse of thoughts. बचपन में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, अभी आधे घंटे बाद, ये सेशन के बाद मैं क्या करूंगा, सेशन चल रहा है, सेशन के चलते चलते where do I go, what do I think, what do I do, सब चीजें हम सोचते हैं. और पास्ट वरीज, पहले की चिंता बहुत आ जाती है हमारे अंदर. ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे, पहले ये किया था, फ्यूचर में मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, घर में बैठा हूँ, प्लेसमेंट्स नहीं आ रहे, प्लेसमेंट्स आ रहे तो मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ. और कुछ होता है हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे परसेप्शंस. यदि हमारे साथ, if something has happened to us in our past, this acts as a major setback or a behavioral pattern for our mind, because that stays in our mind forever and ever and ever, which creates the attitude for us. So, the mind actually creates these thoughts, worries, futures, dreams, experiences, attitudes on the basis of our senses. Now, when we say the senses, it is obviously the ones that you have studied in your schools and lower standards. It is eyes, nose, tongue, ears, and skin. Now, you might say, ये क्या बात है, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा माइंड और स्ट्रेस से डील करा है. आप जो देखते हो वो आपकी आंखों में जिंदगी भर के लिए पहचान बन के बस जाता है. अगर आपने कोई डरावना सीन देखा है, अगर आप आसपास का उसका भी सीन है तो आपको याद आ जाता है, मैंने पता है ऐसा देखा था, मैंने पता है ये देखा था. स्मेल, बहुत सारी चीजें आपकी स्मेल से होती है. यू सी डॉग्स, दे हैव गॉट द सिक्स्थ सेंस, बट द मेजॉरिटी ऑफ देयर सेंस ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स इज थ्रू देयर नोज. एंड यू सी, इफ यू वांट टू नो देयर इज अ लव्ड वन कमिंग टू यू, आप उनको स्मेल करके पहचान जाओगे कि ये उस व्यक्ति की खुशबू है. And that is how you try to relate, and it is also playing a very important role in the emotions of a person. Tongue, see, ये जिभा जो है, टंग जो है, ये सभी चीज का रीजन है. You want to go out and have Frankie, you want to go out and have vada pav, you want to go and have that hot chocolate shake. It's all the urges of tongue. और इस tongue को आप कितना भी खिला जाओ, it will go on and on and on, it will never stop. At this point of time comes the ears into picture. आप जो सुन रहे हो, लाइक यू आर हियरिंग नाउ, आप पिक्चरों के गाने सुनते हो, 4 बोतल वोड का, काम मेरा रोज का, छोटे छोटे बच्चे गाते रहते हैं, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है. वो क्या सीखेंगे उस गाने से? वो कान में बैठ गया कि 4 बजे तो पार्टी होती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. इस तरह के गाने बजा बजा के, ऐसी चीजों को सुन सुन के, व्हाट आर वी लर्निंग? एंड ऑल्सो कम्स आवर स्किन, the way we feel, the way we are touched, the way we have the environment around us. This is all 5 things which influences the mind. And this mind, on the basis of these 5 senses, it creates a process of thoughts, worries, future dreams, and everything. So, therefore, let's have a video here. We'll have a look.
Okay. So what did you learn from this video? I would like to know from you all, beta, what did you learn from this video? What is your learning from the video? Okay, patience. Sorry? Mind peace, it depends upon our mind. Very good. One by one. Control on our mind. Focus. Very good. We can control the experience of a situation. Very nice. Somebody else now? What did we learn from the video? This is the question. So one of the child, Hamza, is saying confidence. Okay. Okay. So one of the major learnings that we get from a particular concept is that we usually have the things in our hand. हम कैसे एक सिचुएशन को परसीव करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से. Whatever we do, wherever we are, something or the other, every situation is going to give us a tension, or else you can say a pressurizing situation or a stress. But how do you react to it is completely in our hands. How do we react to it is in completely our hands. So, whether you are into stress and you want to smile or be morose, somewhere or the other depends on how are we going to behave in that particular situation and circumstance. Come, let's go ahead and talk about the same. Talking about when and how is the stress created in mind. So you give a stimuli to your senses. These are the 5 senses that we just discussed about. So the stimuli is given to the senses, which in turn instigates the mind. Now, mind can use its intelligence. Now, intelligence can be used to the unknown things. Now, unknown things, if you behave in a negative aspect, it creates stress to the mind and it wants to take some corrective action. So, when the stress is generated in the mind, you need to take some corrective action. Now, what is the corrective action over here? Once you realize that, oh yes, I have this problem going on, you have realized what is the problem. The step is no stress. But if in case you haven't found the reason or else a way to improvise it, it is going to give you stress. Basically, the point is when you have a situation which comes into your mind, you are not able to tackle it with your intelligence, then it is going to create a stress in our mind. But if you are able to handle it with your intelligence, it won't be giving you stress. If you have taken a corrective action, it won't be giving you a stress. Now let's take up some practical examples over here. You are at your home sitting peacefully and you hear a loud noise outside the window. Now you will run to the window and try to know what has happened. होता है कि नहीं होता है? आप खिड़की में बैठे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो और अचानक से या घर पे बैठे हो लेक्चर सुन रहे हो, बाहर से आवाज आती है बॉम्ब किया, भागते हो खिड़की पे, क्या हुआ देखने के लिए. फिर क्या होता है? The loud noise was nothing but the bursting of a tire of a scooter. Tire burst हो गया एक स्कूटर का. When you looked out of the window, not only your fear set at rest, but you were also amused to see a person dragging the scooter. जैसे ही आपने खिड़की के बाहर झांक लिया, आपने देखा कि अरे टायर बर्स्ट हुआ है, बस और कुछ नहीं. इमीडिएटली क्या हुआ? जो आपको डर लग गया था, अरे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ क्या, सिलेंडर बर्स्ट हुआ क्या, अरे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है क्या, कुछ बहुत सीरियस हुआ, किसी ने किसी को मार दिया, कोई चोरी हुई क्या, आपके जितने भी फियर्स होते हैं सब कुछ रेस्ट पे आ जाते हैं. बल्कि आप क्या देखते हो? कोई एक व्यक्ति है जिसका स्कूटर का टायर बर्स्ट हुआ है. वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने स्कूटर को ड्रैग करते हुए लेके जा रहा है. Next situation that we can take is, for example, you're working or else in your building you have some subordinate या छोटे बच्चे या कोई और व्यक्ति है, वो आपको एक दिन one fine day good morning wish नहीं करते. क्या होता है बताइए आप? What will happen if somebody who wishes you every day and that person is not wishing you now? What will happen? Tell me, class.
We feel bad. Very good. What else? वेरी गुड, वेरी नाइस. हम सोचना शुरू कर देते क्या हो गया, रोज तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, आज क्यों नहीं कहा, मैंने कुछ कह दिया क्या, कुछ तो हुआ होगा इसीलिए बोला नहीं, मैंने उससे बात नहीं की ना बराबर, इसीलिए उसने मुझे गुड मॉर्निंग, जाने दो, मेरे को क्या पड़ी है, मेरे गुड मॉर्निंग नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता. इन योर माइंड इन सेकेंड्स यू हैव 10 थॉट्स, बट हो सकता है कि उस दिन आपके सबॉर्डिनेट या फिर उनकी बिल्डिंग में कोई बच्चा या कोई रिलेटिव हो who had met with an accident that very morning and so he was very disturbed. Once you came to know this fact, you were sympathetic to him and not annoyed. आपके एक ही सेकंड में दिमाग में हजारों थॉट्स आ गए उसको लेकर, उसने क्यों नहीं बोला, मेरे से गुस्सा है, मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं, मेरी कोई बात बुरी लग गई, ठीक है कोई फर्क नहीं, उसको मुझसे बात नहीं करी तो मैं भी बात नहीं करूंगा. N number of thoughts start coming your mind within seconds. But then when you get to know, oh, that uncle's son. Okay. I think so there is some technical issue because of which it is getting muted again and again. No. What do you do? T वाला TID. Open that ID only. It's muted ना. I'll tell you what is the reason. वो ID किसी के बच्चे को ऐसा लगा है. No, this is we'll sort it out. No problem. ठीक है. Yeah, okay. So जैसे ही आपको पता चल जाता है कि जो बिल्डिंग वाला है उसको कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बड़ा ही सिंपैथेटिक हो, उसका बच्चे का जो एक्सीडेंट हो गया है इसीलिए वो अपने थॉट्स में लॉस था पूरी तरह से और इसीलिए वो डिस्टर्ब हो गया है, तो आप अचानक से उसके लिए जितने भी थॉट्स आते हैं सब वैनिश हो जाएंगे, बल्कि आप सिंपैथेटिक हो जाओगे, आप और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाओगे, आपका गुस्सा सब चला जाएगा और आप सोच रहे बेचारा उसने तो इसीलिए नहीं कहा, मुझे तो पता भी नहीं था, कैसा होगा उनका बेटा भी ठीक हुआ नहीं हुआ, एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू विल बी हैविंग. So what happens actually when stress is generated? If you see this woman, how she is getting panicked, just look at her and see this man, the way he is behaving, the way he is reacting. So when you have stress generated in your mind, there is a particular way how do we perceive it, and that is there is adrenaline, which is एक्चुअली वो अपने आप को करता होगा तो हो जाता है. I found a solution. कुछ नहीं है. One second. T में देखा नीचे ना मतलब TID में बोला नीचे जो T लिखा होगा. And this time it was SE. जब SE भी हो रहा था. Okay. So when see, this is what happens in life. I am here talking to you people about converting stress into smile, and Lord is testing. Are you able to do that first before telling and talking to the kids over here? Before talk. Yeah, I feel somebody is doing that now. Okay. So it's a way how we react to such situations when such kind of surprises start coming in. Okay, anyways. So there is a particular kind of a syndrome, or you can say Pathak Adarsh Manoj. Adarsh from SE. Adarsh from SE. You're requested to please not do the mischief there. You had muted beta by mistakenly probably. So please be careful. अच्छा बेटा यहाँ पर there was something else being shown as a notification. ठीक है बेटा. Okay, chalo, let's continue. Okay.
Now moving on ahead, so here you're talking that there is a particular, you can say, liquid which is being released into your mind that is called as adrenaline, which is actually generated to take a fight or flight action as a way to overcome a perceived threat for survival. This is how you react to a situation. Either you want to fight against it or else. Can you setting mute? It's internet issue. Okay. That's what I give my internet. Can you all hear me? Okay. All right. Okay. Thank you so much for confirming. So this is how what action comes in. Either you take up a fight if somebody is trying to behave in a wrong way to me, so you go and start defending and fighting. This you cannot do with me. This is there, that is there. Or else you take a flight, which is actually perceived a threat for survival. You start feeling, oh, this is going to be a threat for me. मेरे लिए खतरा हो सकता है. तो आप वहां से निकल के जाने की कोशिश में लग जाते हो. Now let's see an activity over here together to understand whether you are a reactor or an overreactor. We're going to see some kind of situations. You can analyze for yourself. How do you react in that situation? The very first situation that we can see over here is, imagine yourself in the following situation and how would you respond? Generating whether you are a reactor or else an overreactor. हम किसी को कहते हैं ना, अरे बड़ी ड्रामेबाज है यार, कितना ज़्यादा overreact करते हैं. Usually siblings में ऐसा होता है. एक भाई ने दूसरे भाई को थोड़ा मार दिया, छोटा वाला इतने जोर से इतने जोर से आप चीखना चिल्लाना शुरू करते हो जब आपके छोटे भाई बहन आपको मार देते हैं, तो फैमिली पूरी उठ जाती है और कहने लग जाती है कि क्या हो गया, छोटी सी बात होती है. बट दिस इज हाउ वी रिएक्ट और एल्स वी ओवर रिएक्ट. ओके, so let's see, you're driving a car in rush hour. So when you're driving your car in a rush hour, how would you react? आपको लेट हो रहा है, ऑफिस पहुंचना है, कोई मीटिंग है आपकी या कॉलेज पहुंचना है, आपके लेक्चर्स जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, डेडलाइन पे काम कर रहे हो और गाड़ी चला रहे हो. How would you react? Would you be running hard or will be just a overreactor? Oh my God, what is happening? मेरा नसीब खराब है, पता नहीं किसका मुंह सुबह सुबह देख लिया. Think and analyze for yourself. Taking another situation, getting a last minute work assignment. Professor आपको आगे कहते हैं, this is a deadline and you have to finish this or else you won't be allowed to apply or appear for your examination. Imagine how do you react at the situation. Would you be a reactor or else an overreactor? Come at every place, go and speak to people. Do you know what has happened with me? मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, क्या बताऊं? इतना बड़बड़ करने से ज़्यादा अच्छा जाके अपना काम करके finish करो. Then when you misplace something in the house, घर पे ही है, इधर ही तो रखा था, कहाँ गया? इधर ही तो था, मिल नहीं रहा है, अरे पर इधर ही रखा था, मम्मी आपने रख दिया, पापा आपने रख दिया, ये इसी का काम होगा, हर बार मेरी चीजों को छुपा देते हैं. How do you react? Are you peaceful or else you start becoming too impatient? Dealing with incompetence at work. आपका बॉस आपको कहता रहता है तुझे कुछ नहीं आता, यू कैन नॉट डू दिस, प्रोफेसर्स आर टेलिंग यू, एक तो काम दिया था, एक बार तो सीआर बनाया था, इतना तो संभाल लेते, एक ही तो प्रोजेक्ट था, कम से कम ग्रुप से तो कोऑर्डिनेट कर लेते, अरे कम से कम लेक्चर का कोऑर्डिनेशन दूसरे टीचर से कर लेते. 10 चीजें आपको बोल दी जाती है, तो आप कैसे इनकम्पिटेंस में रिएक्ट करते हो या डील करते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लानिंग योर बजट. घर बैठे हो, घर बैठे बैठे कुछ और टेंशन तो है नहीं हमें, मम्मी पापा सारा खर्चा देख रहे हैं, बट नेटफ्लिक्स चाहिए तो उसके लिए रिचार्ज करना होता है. आपको इंटरनेट का अच्छा स्पीड चाहिए, लेक्चर्स में ही बहुत सारा आपका लेक्चर्स में ही आपका बहुत सारा डेटा चला जाता है, तो फिर आपको और इंटरनेट चाहिए. और ऐसे समय पे बजट प्लान करना कि जोमेटो पे ऑर्डर करे नहीं करे, घर बैठे रहे, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाए नहीं जाए, क्या करे. At this situation, how do you react? And being blamed for something that you have done or you haven't done, irrespective of आपने किया है या नहीं किया है, how do you react when somebody blames you? You did it.
So how do you react? Are you too stressed and you start defending? मैंने कुछ नहीं किया, हर बार मेरे ऊपर उंगली उठाई जाती है, तू नहीं किया है, मैं कुछ नहीं करती, मेरे साथ ही जिंदगी भर ऐसा होता है, and you start जिंदगी भर का पहले ऐसा हुआ, ये हुआ, वो, you know, our mind is like a floppy disk. एक चीज हुआ नहीं कि सारी की सारी पूरी पुरानी कहानियां सब ला के सामने रख देता है. पता है जब मैं 2 साल की तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता है जब मैं 5 साल की तब ऐसा हुआ, जब मैं 7 साल की हुई ना तब ऐसा हो गया था मेरे साथ, अभी 2 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था. सब लोग घर पे बैठ के लॉकडाउन में डालगोना कॉफी बना रहे थे और मैंने मम्मी से सिर्फ एक नींबू पानी मांगा था, मुझे वो नींबू पानी तक नसीब नहीं हुआ था. पता है कितना जुल्म हुआ है मेरे साथ. This is how we start overreacting over situation when we are blamed for a situation or something that you have done or you haven't done. Now, anger is very natural. We need to remember this. Why? Because it is emotional response to these perceived threats. When you feel threatened, जैसे आपका फोन है, आपको पता है कोई लेके जाएगा, एक बार छोड़ा आपने, बाजू में से वापस से कोई लेके जाएगा, फिर आप क्या है देखो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि वो फोन चोरी कर लेगा. सो इट इज ए नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स. आप नेचुरली रिस्पॉन्ड करते हो अगर आपको कोई सिचुएशन है जो कि थ्रेटफुल लगती है, आपको डर लगता है कि अरे ये हो जाएगा. व्हेन पीपल आर फेलिंग इन रिलेशनशिप्स, they have a common reaction, and that is anger. They are emotional from within, but the reaction they give to the people is anger. They don't want to talk to anyone. वो सब चीज़ों को फेंकना स्टार्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं. दुखी होते रहते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में we need to learn as to how do we behave and react to a person. So when we say or when we feel we are stressed, we actually see these 5 things in us. We feel stressed when it is CEOIF. What is the CEO? This is an acronym. When our control is not accepted, we want to control something but they don't accept it. We have our expectations and it's not fulfilled, so we get frustrated. हम अपने ओपिनियन देना चाहते हैं पर उसके कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है. हम फील करते हैं कि अरे मेरी तो बेइज्जती हो गई. और जब हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं ये देखते हुए कि आई एम नॉट एबल टू डू दैट. देखो बेटा, इंसल्ट ऐसी चीज है. देयर इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन, एन एग्जांपल दैट कम्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सोक्रेट्स. Socrates was very much interested in philosophy, and his wife used to hate him for philosophy. She used to keep telling him, why do you do this? You're wasting your life. Use your brain and go and do something else, something constructive. And he would call his friends and other people at home and discuss on philosophical aspects. And she would be from the kitchen speaking loudly, screaming, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो. बर्तन फेंक रही होती थी वो. One fine day she got very upset and she said, you better go to the park and do whatever you want to do there. Don't do anything in my house. Now Socrates was a person, he was very cool and calm. He knew this is a nature, irrespective of whatever I do, things will never improve. That is what he knew always and forever. So what he did was he said his friends, चलो हम पार्क में जाते हैं, वहाँ पर जाके let's discuss. It's not possible here. Now when she saw that he is getting up and going out from there, she brought a bucket full of water and poured it completely on him. Now all his friends were astonished, surprised. Just imagine, he is such a great philosopher. And what has his wife done to him? They all were very, very sad. But how did he react? He just reacted with a smile and he moved ahead. Because he didn't take that situation as an insult. So the things and situations in life is how we perceive them, we look upon them, how do we react to those situations. In today's world, even छोटे से बच्चे को insulted feel हो जाता है, बेइज्जती कर दी, सबके सामने बोल दिया मेरी तो बेइज्जती हो गई. Please remember, how do you react to a situation will decide whether you are getting into stress
or you are overcoming that situation. So, when I want to control, we want to be in control of money, situation and people without interference. हम अपनी मर्जी से खूब सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लोगों को भी अपने वश में रखना चाहते हैं और किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. But then what happens? I faced failure because money was not in my control. वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ना ही वो लोग मेरे कंट्रोल में थे. And it leads to tears, stress in my life. It's not happening as per my opinion. जब हम insist करते हैं, demand करते हैं, command करते हैं, ये करो, it's my way or the highway, my opinion. But सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता है. इससे गुस्सा आता है, झगड़ा आता है, hatred पैदा हो जाती है. And when I'm feeling insulted, basically the feeling of being insulted is a threat to self-esteem. Where is my respect? Where is my, you can say, self-immunity? It's very important to understand whether you are being treated unfairly or rudely. Are you really being treated like that? When you are neglected, you feel insulted. When you are denied, no. It leads to frustration in your desires. जैसे छोटा बच्चा भी होता है, उसने चॉकलेट मांगा और आपने कह दिया नहीं, तू तुरंत पंच करना शुरू कर देता है. आजकल बहुत कॉमन हैबिट्स है, पहले ऐसे नहीं थे. पहले अगर छोटे बच्चे को भी पेरेंट्स ने मना किया नहीं तो वो मुंडी नीचे करके कोने में बैठ जाता था, थोड़ी देर सैड होता था, फिर खेलना शुरू कर देता था. आजकल बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? एंड सिमिलरली इज अ रिएक्शन विद अस. एंड व्हाट इज द रिएक्शन? वी डू दैट. दैट इज we feel insulted and we start overreacting. We start punching, we start blabbering. We don't have a control on this freely accessible muscle of our body. It is a boneless muscle, our tongue, which we don't have a control on. We go on speaking, blabbering anything. It does not matter how much is it going to hurt the other person. How much is it going to be painful to the other person. We don't care about it. Let it go to hell, yaar. I need to tell how I felt. सामने वाले को क्या फील होता है, मुझे क्या करना है, मुझे बुरा लगा ना, I will do that. And then comes frustration, which also arises due to our refusal to accept the things which are inevitable. There are two most important inevitable truths in the world: happiness and distress. खुशी आएगी, जाएगी, दुख भी आएंगे और जाएंगे. If you say I want to be sad forever, sorry, that cannot be a fact. And if you say I want to be happy forever, sorry, that can also not be a fact in life. And therefore, we need to learn we are not independent in achieving success. We are co-workers with God. We always do something, but it is Lord who helps us along. If some plans fail, it's always going to be a surprise for us. Don't worry, just relax, settle down. There might be some big change which might come up to your life. So, when we feel stress, these are the 5 reasons why we feel stress, which is called as CEOIF. Now, changing conditioning by changing scripts written in our mind. We have everything written over here. You know, this is some fact we have realized over a period of time. You for lifetime keep running from a situation that has happened in your youth or childhood. And you say, कुछ भी करूंगी पर ये तो नहीं होने दे सकती. कुछ भी हो जाए पर ऐसा जो इनकी जिंदगी में वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए. बट ये कहते कहते कुछ भी हो जाए पर ये नहीं, हम फोकस कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली ऑन यही होना चाहिए, यही हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, नहीं होना चाहिए, हो सकता है तो. I don't want this to happen, but this might happen with you. Oh, this is happening. And somewhere or the other, we also land ourselves into that same problem like the other person. Because this is what we want. In our mind, it is written as a script. I don't want this, I don't want this, I don't want this. But have you written what do you want? Are you focusing every day on what do you want? No. So we need to change the conditioning by changing the scripts that are written in our mind. So therefore, here comes the ego principle. If you have garbage coming in, there will be only garbage which will come out. But if you have positivity which comes in, positivity will only come out. But if in case you have negativity coming in, it will be having negativity which will come out.
So therefore, if there is good things coming in, it will always be good things that will be coming out. एक व्यक्ति को हम कहते हैं कई बार जब भी ये मुंह खोलेगा कुछ तो बोलते थे, some phrase attached to it. तो जब भी ये बोलता है मुंह से गंदा ही बोलता है. क्यों? उसके अंदर भरा हुआ है वैसा. जब आपके अंदर ऐसा भरा हुआ है, बाहर भी क्या निकलेगा? यही सब चीजें निकलेंगी. So our mind, my dear kids, is like a book. A blank book on which we have to write. Now, this mind will have all the kinds of thoughts. There might be positive, negative, necessary thoughts, waste thoughts, everything. Now, when we say positive thoughts, you might have good feelings like joy, the feeling of being loved, hope, mercy, peace. You'll be feeling the desire to be honest. There might be harmony. You will be having tolerance, enthusiasm. Let's do that. Let's do this. And also you will be understanding. But then comes a negative kind of a thought process. गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस बनता जा रहा है, ईगोइज्म लाइफ में आ जाता है, रेसिज्म आता है, नेगेटिविटी, लेजीनेस. सी बेटा, जिंदगी में एक सबसे बड़ी रुकावट है आपके सभी सपनों को पूरा होने से रोकने में, वो है लेजीनेस. आप बेड पे पड़े पड़े बहुत कुछ सोचोगे, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये आज कर लूंगी, बट सोचा है और आप पड़े हो लेजीनेस के कारण. Think one thing and get up from your bed and go and do it. Then that won't be laziness. But क्या हम वो कर पाते हैं? ख्याली पुलाव बनाना बड़ा अच्छा लगता है. हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, हम केयरलेस होते हैं, बदला भी लेना चाहते हैं, बट जो थॉटफुल चीज है जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस नहीं करते हैं. सो नेसेसरी क्या है? नेसेसरी है कि आप अपने काम काज के बारे में, अपने करियर के बारे में, आपका रूटीन और प्रोफेशन पे आप फोकस करो. और वेस्ट क्या है? पता है पहले ऐसे हुआ था, यू नो, आई विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन्स इन द ईयर, एवरीबॉडी इन द कॉलेज विल बी प्राउड ऑफ मी, दे विल ऑल से, डू यू नो द स्टूडेंट इज अ पास आउट फ्रॉम एला तिवारी कॉलेज एंड इज सच एन अमेजिंग स्टूडेंट. सब लोग कॉलेज में पोस्टर लगा देंगे मेरे नामों का. अरे, live in the present, live in today, forget about the past and forget about the future. Just leave it. Focus on what kind of thoughts are coming. So, this is actually the chariot of our body. What are the chariots of our body? These five senses, that is our eyes, our ears, our nose, our tongue, and our skin. And who is running our senses? It is the intelligence. We are running it out of our intelligence. You need to use your intelligence. What do you want to see? Today's time, the largest paid online site is for pornography. Today's students are so addicted to it, and in fact, after the Netflix and everything coming in, these are so easily available things. Just a subscription and everything you get. In fact, I am seeing nowadays Pocket FM, if you have observed, this is something that is so cheap media which is giving normal advertisements on every YouTube page. They are just narrating a story with visuals, and such bad stories they are narrating. And it automatically, hearing that story, you are like, oh my God, this is such an amazing thing, mujhe sunna hai. And you go to that site and you start observing and hearing and watching that stories and everything. So, your mind has to be controlled by the intelligence, and that intelligence is being run by your soul. So these five senses can be in your control. Your eyes can be in control when you are thoughtful about what do you want to hear. Your nose has to be careful. जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको स्मेल, खुशबू आती है, किचन में बहुत अच्छा अच्छा कुछ बन रहा है तो बड़ा मजा आ जाता है. वही आपको कचरे के डब्बे के पास ले जाकर सुला दिया जाए तो अच्छा लगेगा? वो बड़ा मजा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. और टंग टेस्टी, सुबह से लेकर रात तक टेस्टी फूड. आपको कहा जाए हेल्दी फूड, हाँ, हेल्दी फूड कौन खाता है? ना, आई वांट टेस्टी फूड. एंड स्किन, वी वांट टू फील गुड, वी वांट टू हैव अ ब्रीजी एनवायरनमेंट वेयर यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, सैटिस्फाइड. बट व्हाट अबाउट द सोल? इज एनीबडी थिंकिंग अबाउट द सोल? And that is where the picture or stress comes into mind. If you have a control on these five senses, which is being done by the mind, but mind can be controlled only with your intelligence. Now, what is the nature of mind? Two things we'll see. अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है और अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? If your mind is controlled, it is your best friend because वो वही करेगा जो आप कहोगे.
आपको पता है एग्जाम आ रहे हैं, आपको पता है आपको पढ़ना चाहिए, पर मन क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी बैठ के ऑनलाइन कुछ देखूंगा, मोबाइल पे जो देखना देखेंगे। और अगर अनकंट्रोल्ड हुआ तो इट विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। बिकॉज आपको पता है एग्जाम है, पढ़ना चाहिए, बट आप अपने मन की बात उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट उसको फ्री छोड़ दे रहे हो। So the question comes, can the mind be our friend? So there is the analogy which comes in, which says that mind is compared to a knife. Is the knife good or bad? Who would like to tell me? Come on. Ah, beta, very good. What situation? Tell me that. Yes, like how do we use it? Sorry, come back. हाँ, very nice. I'm very happy to see that our students are quite intelligent and thoughtful too. They are taking their mind in a positive process of thinking. So, knife can be good or bad, deciding on a situation which could be a knife in a surgeon's hand. It can save the life of people. क्योंकि वो आपके पेट को कट करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है पेट में उसको निकाल देंगे, उसको स्टिच कर देंगे। और वही सेम नाइफ, if it is in the hand of a miscreant, he will use that knife to kill a person. Right? So, if a mind is uncontrolled, what can it do to you? बोलोगे क्या इतना सोचना है यार, जिंदगी में इतना कुछ सोचने के लिए है। अब मन क्या करता है उसके बारे में भी सोचे। You need to know what will happen. If your mind is uncontrolled, then what will happen to it? You will lack confidence. करूँ नहीं करूँ, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। I cannot do it. I cannot do it. That will be your reaction. And आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन। बेटा आज से करीब 100 साल पहले ये बीमारी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, और इसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुई, जहां पर 1960s में ऑलमोस्ट पहली बार इसकी दवाइयां मिलना शुरू हुई थी। और उन्होंने फिर धीरे धीरे करके एक बीमारी को, इसको एक बीमारी मतलब दे claimed it or declared it as a बीमारी, as a disease, and gave it the name as depression. When your mind is uncontrolled, it can lead you to depression. Loss of trust. हम कहते हैं ना मेरा तो विश्वास ही उठ गया है, मुझे तो किसी पे भी विश्वास ही नहीं, I don't trust anyone, इतना धोखा खा लिया मैंने, मुझे दुनिया में किसी पे भी विश्वास नहीं. It leads to stress as well as hypertension. Just imagine a person who is leading his life under so much of tension. Family stress, relationship stress, peer pressure, professors are there, your career, your dreams, your desires, और ऊपर से पुलिस वाले अंकल चलते फिरते मास्क पहन के, जाइए कोरोना भैया आके और हमारे ऊपर करुणा कर रहे हैं. It also leads to madness, which in turn will lead to dangerous diseases. A person can literally go crazy because of this uncontrolled mind. You might damage to your own self, your family, or else even your society. You might have heard instances जहाँ पर the mother killed herself as well as a baby. The father killed his children as well as his wife, and he himself killed himself. What is this? This is basically an uncontrolled mind. This is what it can do. And weaken determination. जब हमारा determination बहुत ही ज़्यादा weak होता है, तो जाके ये और हमारे लिए problem create कर सकता है. Because when your system, your senses are disturbed, it will be having a flickering mind and your intelligence will be all lusty. It won't be having good thought processes. It will take you towards all the dirty mindsets and attract you to all these kinds of syndromes. Now, result of action with uncontrolled mind. अगर आपका mind control नहीं है, आपका mind flicker करता है, senses control में नहीं है, lusty intelligence, आप दिमाग use करोगे, but अपना desire of lust को पूरा करने के लिए, what do you feel? What is the result? You find a situation of rape cases coming in.
There are lots of people who come up and do murders. You will go out freely and go on boozing. You'll be having lots of liquor, alcohol. It's common trend. Come on, everybody does that. It will become the new normal, which it has become like now. You will be going and breaking a TV set. लोग करते हैं, बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल ये सब चीजें. मोबाइल फेंक के तोड़ देना, टीवी उठा के फेंक देना, लैपटॉप फेंक देना, गुस्से में आकर. And picking up quarrels. खुद ही जाके आ बैल मुझे मार. खुद ही जाके क्या बोला? देखो तो कुछ नहीं कहा मैंने. नहीं तुम मेरी तरफ ही कुछ बोल रहा, मतलब सामने वाला कुछ नहीं कह रहा है, मन ही मन में अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ हम झगड़े करना शुरू कर देते हैं. Suicide. You know the biggest case studies, the recent people who have committed suicides, and you are shocked, under great shock. Kyun? Why? It looks so perfect, and you don't have an answer why that person did so. Then prostitutes are there. There's this entire business of prostitution. Also, you get into the situation of burning houses of the people out of jealousy. And cigarettes, a common thing today. They say, the girls say today, why do you discriminate? Why isn't there equality? If the men can smoke, why can't the women? But it's not about men or women, it's about a habit which is going to spoil our lives forever. What is the solution for stress? So, the solution for stress is escape, which we're going to study now. As well as the solution for stress is escape stress. These are the 12 acronyms which we'll quickly go through and understand how do we convert our stress to smile. First one is expectations. We have lots of expectations in life. Please try to give them up. The more you expect, the more morose you will be and more sad and difficulty you will face in your life. Then seeing success as right or wrong definition. No. Something might be success for a person, while the other person might see it as you can say as a failure. So success का कोई right या wrong definition नहीं होता. It is about you and me, and how about we see us in the eyes of being successful person. जैसे जो बच्चा गांव में पढ़ रहा होता है बेटा, उसके लिए सिर्फ एक ग्रेजुएशन कर लेना बहुत बड़ी सक्सेसफुल बात होती है. आप सभी घर पे बैठे बैठे 12th देकर आए हो, आपको पता है कि कॉलेज में एडमिशन लेना कितना डिफिकल्ट होता है, और आपके लिए सिर्फ कॉलेज में एडमिशन मिल जाना भी एक सक्सेसफुल एक्ट था. So there is no right or wrong definition of success, but yes, we define it. And then comes comparison. Give this habit. You know, the crabs are exported openly while they have been exported for the purpose of selling through the ships. Because वो क्रैब सोचता है कि ना मैं बाहर जाऊंगा ना दूसरे को बाहर जाने दूंगा, तो इनको ओपन ही फ्रेशनेस के लिए जिंदा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जैसे ही एक क्रैब ऊपर चढ़ता है, दूसरा क्रैब उसका पैर खींच के नीचे ले आता है. देखो इस इमेज में आपको दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज क्रैब मेंटालिटी. ना हम प्रगति करेंगे ना किसी और को प्रगति करने देंगे. दैट इज रॉन्ग. डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन. यू आर यूनिक इन योर ओन सेल्फ. And acknowledge good fortune with gratitude. Beta, this is a very important habit. Having a feeling of gratitude in your hearts. What do you say? Oh Lord, give me the courage to change the things which can and ought to be changed. The serenity to accept the things which cannot be changed, and the wisdom to know the difference. Oh Lord, give me strength and courage. ऐसी चीज़ है जो मैं change कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे courage दीजिए ताकि मैं change कर सकूँ. ऐसी चीजें जो नहीं चेंज हो सकती उसके लिए सेरेनिटी दीजिए ताकि मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं. एंड अक्ल दीजिए, विजडम दीजिए, जिससे मैं दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ सकूं. ट्राई दिस हैबिट बेटा. वट एवर यू गेट गुड थिंग्स, हैव अ नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर लॉर्ड एवरी डे. ओ लॉर्ड, thank you so much for beautiful parents who have caring for me, who are loving me like nobody does. Thank you, God, for this beautiful morning that I am seeing today, which many people who have died yesterday didn't see. Thank you, God, for this beautiful admission that I have received in this college. Those kids who could not afford an admission are still struggling, and I am lucky to have a seat in a college. Have a feeling of gratitude. And comes people's comments. Don't be bothered by it. Don't be at all bothered by it.
These actresses would have died already reading comments of the people. Don't take it too seriously or too stressfully. Ignore it. Enjoy what you like to do. People will always have something to say. ये किया तो क्यों किया, ऐसा किया तो वैसा क्यों किया. But always be happy with whatever you are doing. And empathize with others' nature. See बेटा, एक होता है sympathy. बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ. Empathize का मतलब क्या होता है? Getting into the shoes of the other person. उस व्यक्ति के पैरों में enter करना, उसके situation को जानने की कोशिश करना. Why did that person do something in such a way? So therefore beta, at this situation, we should always see the sunny side of the people. Good side. This will actually change your life in a very different way. हम हमेशा ना कमियां निकालते हैं. जैसे आपके बाजू में कोई आपका फ्रेंड बैठता है, फैमिली बैठती है, अभी तो घर पे तो फैमिली की बात होती है, उसकी तारीफ करने बोला जाए तो हम हंसने लगते हैं. हाँ हाँ, इसके अंदर कोई क्वालिटी हो ही नहीं सकती. इसकी क्वालिटी है ना, लेट उठता है, और क्वालिटी है ना, मार खाता है मम्मी पापा से. हम ऐसी बातें करते हैं. बट अगर किसी को एक्चुअली ब्राइट साइड बोला जाए व्यक्ति का बताने के लिए, तो वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. इसके अंदर कुछ है ही नहीं अच्छा. You always see in others what you have in us. If you see bad things in others, you'll also have those bad things in you. And train journey like life. आप एक ट्रेन में एक सीट बुक होती है तो उधर बैठते हो और फिर क्या करते हो? जिंदगी भर उस ट्रेन में बैठे रहते हो कि मेरी टिकट है, ये मेरी सीट है, मैं तो इधर ही ट्रैवल करूंगा. Is it like that? Tell me. आप गए, आपकी जर्नी पूरी हुई, आप उस सीट को वैसे ही छोड़ के आगे चले जाते हो. जिंदगी भी वैसी है. इट्स अ जर्नी. टेक इट एज अ ट्रेन जर्नी इज. यू गो, finish your work and you move ahead in life. Don't be too attached to morose or too detached to anything. And right thinking about past, present and future. It's very, very essential that you have a right thinking about what has happened. Something has happened, it is to teach me a lesson. Something that is going on, I will make the best of it. And future would be determined on what I do today. So in turn, मुझे आज में रहना है. And ego. This is a very, very, very difficult thing to give up. Very difficult. We need to deal with false ego. Very important. So when you are sorry, yeah. Am I mute? Okay. So when I act with an ego, you see, वो लोग अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हैं, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मेरे लिए तो बोला ही नहीं. But that is my ego that I don't want to go and gel up with them. And when I act without false ego, I also become a part of them. I do what they are doing. Done. So I was the first one to put this idea in the meet. Others are simply followers. मैं हूँ जो मैं बताऊंगी सबको वही करना है. तुम लोग follow करोगे मुझे, not an follower. Not happen. Does not happen ever like that. I was the only one to win this particular award in the last 6 years. मुझे ही ये award पिछले 6 सालों में मिला है. I am an amazing person, amazing performer. Nobody can move the project forward without me, mind you. मेरे बिना तो चल ही नहीं सकता है. जो भी चल रहा है ना, सब कुछ इस दुनिया में मेरी वजह से चल रहा है. What is that? मेरा, मैं, I, it's ego. Give it up. And I'm saying it, even I am saying it, give up the ego, but even I have the ego in me. The day we give up this ego, our life will be much more easier. And stress to impress. Give it up. See these people? This person is multitasking over here just to impress that everybody says, wow, amazing. But do you know the kind of stress that person is taking? See this person who's acting as a bodybuilder here. What all things, he cannot have his favorite food just because he wants to make his body. These abs like this so that people say, amazing man. We love you. What an amazing physique you have. Stop it. Stop stressing to impress others. Live a life for your happiness too. And the last point is,
sublimate desires, not suppress or express it. When we say sublimate desires, it means you cannot suppress it. See, if I have a desire to have an ice cream, I cannot suppress it. No, ice creams cannot, just cannot be done. Yeah, if I go to everybody and say, ah, I want to have ice cream. Please give me that ice cream. Please give me that ice cream. I'm expressing to everyone I need to have that ice cream. No. You need to sublimate it. You need to actually, you can say, replace it. In simple words, you can call it as replacement. And slowly and steadily, your desires will get an easy way to exit, or else you can say it can be easily tackled very nicely. So don't suppress and don't express a lot. या तो हम बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना, या फिर सबको एक्सप्रेस करते हैं, दुनिया में जा जाके अपने दिल का प्रचार करते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ. दोनों ही चीजें बहुत खराब है. बल्कि हमें क्या करना चाहिए? सब्लिमेट. Try to understand the greater things that we can have for us. So the solution for stress is these 6 things: expectations, success definitions, comparison, appreciate God's grace, people's comments, empathize with with others' nature, that is, escape from all of these things. All these 6 things, we have to take an escape way, and also see the sunny side, and see the life as a train journey. Use your brains for right thinking. Give up this practice of ego, and stressing to impress others is useless. Sublimate desires and not suppress it, which is stress. So these are the 12 ways in which we can be acting as a way, or in a way, to reduce our desires, or else you can say convert our stress to smile. Okay? So, my dear students, I would like to thank you all for your patient listening, and I would request you all to please speak up if you have something to speak about, discuss about, some queries or some more efficient things that you would like to know. So there is a question which has come up over here. Ma'am, I have a question. When a person goes wrong, हर इंसान तो कुछ ना कुछ सही सोच कर ही करता है ना काम. या you're right. इंसान गलत कब होता है? इंसान गलत नहीं होता है बेटा, बट जीवन में जब वो सिचुएशन ऐसा आ जाता है, जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हो, वो मैटर करता है. हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है सही इंटेंशन के साथ, बट आपके साथ क्या होता है वो आपके हाथों में नहीं है. सो जब वो चीजें आपके प्लान के अनुसार नहीं हो रही है, that time you need to become submissive and have an acceptance to it. Your thought process at that point of time matters the most. Okay? Yes, Yash, please see. So beta, we cannot be both of them. If you think of So beta, Bhagavad Gita is a message given by Lord Krishna to Arjuna, right? And Krishna said that you should get up and fight. And Arjuna was saying, no. He was giving n number of reasons why I should not fight. So yes, beta, ignorance is the smartest. You're right. Yeah. So beta, we cannot be dumb. You need to know where you have to open your mouth and fight. Like Hanuman. You have anger, you should know where you have to use it. Hanuman, उनकी पूंछ जला दी गई. उनको गुस्सा आया ना, तो कब उन्होंने यूज किया उस गुस्से को? उन्होंने पूरी लंका को जला दिया. किस लिए? क्योंकि कोई व्यक्ति था रावण जैसा, जो कि गलत कार्य कर रहा था. हनुमान के साथ नहीं. किसके साथ? सीता मैया के साथ.
So he used his anger at the right place. So you're right, he cannot be ignorant to wrong things. But beta, violence will also not solve it. You need to know where you have to use your anger. And how will you get that knowledge of using your anger at the right place? When you have a pleasant mind which is stress free. Do you get that, Yash? Yeah. Yes, beta. Very good question, beta. In today's time, we majority of the people have this problem of anxiety in our life, and that is a mega trouble for us because everything can be in control, but the anxiety that we get. What is anxiety? Okay, you can define what is anxiety for yourself first now. Shiva, tell me. हाँ. So, हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा बेटा. When we have things out of our control and things when they come up at the end moment, we get anxious. Thinking, अब क्या होगा अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या सिचुएशन होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. You need to coolly sit down and think, if this assignment is given to me, I am able to perform it well. Yes, the professor would be happy. And if not, then what? थोड़ा सा सुनाएंगे, सुन लूंगा, वापस से टाइम मांग के कर लूंगा और. बट ये एंजाइटी के लिए बेटा डील करने के लिए you need to start meditation. Because कहीं ना कहीं anxiety is the reason which will in future lead to stress, which will be an outburst of frustration, anger and everything. Then books B. You can check books. There's a question. Okay. डिप्रेशन. देखो बेटा, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं डिप्रेशन के. जब आप अपने मन में कुछ चीजों को बहुत समय तक दबा के रखते हो, एंगर हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, वो आपके माइंड में ट्रोल ले लेते हैं, बहुत ही ज्यादा हेवी हो जाता है आपके लिए. और आपको उसको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपको समझ में आना ज़रूरी है कि इफ़ आई हैव अ फीलिंग गोइंग ऑन, आई नीड टू गो आउट एंड स्पीक टू पीपल अबाउट इट कि आई एम फीलिंग इन दिस वे, प्लीज़ गाइड मी. हम किसी से आजकल ओपिनियंस नहीं लेना, सजेशंस नहीं लेना चाहते. हम अपनी क्या सिचुएशन फेस करें वो शेयर ही नहीं करना चाहते हैं. सो ऑटोमेटिकली हाँ बेटा, तो इसीलिए क्या होता है कि हमें बोलना जरूरी है, पर सोच समझ के. ऐसा नहीं कि हम दोस्तों के सामने अपना दिल प्रकट कर दे और फिर पूरे कॉलेज में जाके वो सब जगह पे जाके हमारा मजाक उड़ाएगी, पता है इसके साथ तो ऐसा हुआ था, ये हुआ था. तो थोड़ा स्मार्टली अपने दिल को प्रकट करना होता है. डिप्रेशन इज नॉट वन डे थिंग, इट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर years and years of building up. So please go and do physical activities. Physical activities से आपका माइंड जो होता है वो बहुत ही फ्रेश रहता है. प्लेइंग बैडमिंटन एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स. घर पे हो तो घर बैठे बैठे डांस करो, जुम्बा, योगा. इससे क्या होगा, जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो पसीने के फॉर्म में एनर्जी जो है वो एक्सरसाइज करने से रिलीज हो जाएगी. सो आपका बॉडी रिलैक्स होगा एंड यू फील गुड, यू फील बेटर. ओके, ऑलराइट. देयर आर यस बेटा बोलो. Are all your desires fulfilled? How are all your desires fulfilled? You are working to fulfill them. Yeah. So beta, you need to know what things, you need to divert your desires in the right direction. Very important. I might desire for an iPhone, but I should know, is that going to give me happiness? I might desire to get a Ferrari, but is that going to give me happiness? So you need to start working for a superior purpose, a superior desire by which you will start feeling satisfied.
The more you think that, okay, getting a bike, materialistic things, having a good home, better paying job, more of appreciation, better social life will give you happiness, then we're wrong. So you need to change the direction of your desires and understand which desires are going to give you happiness. Like people, they tell me, why are you doing this? Why do I come and talk to the people like this? Like I'm talking to you and talking to you about stress and smile. Don't you have things to do in your life? I have just got married. It's been just like 1 year, 1 month of my marriage. And we have a beautiful life over there. But I'm sitting over here and talking to these 100 batch of students over here, hundreds of students over here. Why? Somewhere or the other, this desire to share what I have learned a little bit in my life gives me happiness, gives me satisfaction. So, why am I talking to you about this? Because you need to direct your desires in the right direction, and that will give you happiness. Fulfilling just desires won't give us happiness. Okay, Rajbhar? Yes, it does. But you need to know whom do you need to submit yourself. Yeah, beta. See, beta, I am not saying you should not have an iPhone. You should have an iPhone, but you should know how do you use that iPhone. I'm not saying you should not have a beautiful house, but you should know how do you use that beautiful house, because just getting a beautiful house won't get you happiness. Did you get the point, Kahar? So desires, yes, yes, please. Very good question, beta. Very nice. See, beta, one very important thing. Just try to convince your mind to stay in the present. You need to give a chance to the other person too. You need to say that that was a past experience, the person might have changed, experience might have changed, or this is a behavior which I need to be careful about even in future. The person's this behavior was troublesome because of which I was hurt in the past. So if this is a behavior which is trying to hurt me, I will try to control that, I will try to deal with that. Are you getting it, beta? And try to deal with that situation, live in the present, and if that situation like before comes before you, you need to become cautious because this is something that has hurt you. So the person will never hurt you, but that action of a person in a particular situation will hurt you. This is how you can actually become mature. Okay. Yes. Hmm. Yes. नहीं बेटा, एक्सपेक्ट करना किसी भी सिचुएशन में रॉन्ग नहीं है, बट आपको जब वो चीज मिलती नहीं है तब आप कैसे उसमें रिएक्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है. आपने एक्सपेक्ट सी बेटा, प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सपेक्टेशंस. अगर आप एक्सपेक्ट करते जाओगे आपको उसके रिजल्ट तो मिलेंगे ही नहीं. करना, जैसे कि भगवद गीता में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आप अपने कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो. It's a big statement. It's not easy, huh? It's not at all easy. But this is very important. Very important. कि हम करें. Problem कहाँ पर आता है? Expect. See, I post a photograph of mine on social media is not a big thing. But I expecting people to comment and like and have appreciation on it is a wrong thing. Because I am trying to judge and make my happiness, I am making my happiness dependent on those comments and likes. Did you get it, beta? If I like to dance, yeah, beta. If I like to dance and make reels, it's my happiness. I should not get affected with people commenting anything about it. That is how you should react in a situation. Okay? Okay. So I can see some questions over here. Ma'am, are you the member of ISKCON? Yes, beta. Bilkul we are.
Okay, when we gain something, we lose something. Yes. One of the question is, ma'am, how do we handle failure? So yes, failure is something a very important part. It will come and go, as we said. Failures are stepping stone to success. So if failure comes in our way, we should understand there is a bigger hand. There is something that is happening with the will of Lord. And dealing with the will of Lord, it will be easy for us to handle कि ठीक है भगवान की कुछ और इच्छा है. There is something much more better for me. Like Thomas Edison. What did he do? Who would like to tell about him? Quickly. Yes, and then what happened? Yes. So does he become sad after it? He should have thought about it before. Or else he Actually, beta, most of these people who are scientists, they have done these things only. Scientist comes, they gives a theory, and that person has died. Another scientist comes, takes it ahead, then takes it ahead, then takes it ahead, and many more such kind of things like this. So yeah, we should never actually get sad about such kind of things or too happy. And many times life passes about. Just you can take the example of Galileo Copernicus. They made doctrines. Today we say, oh, the earth, and it was discovered by these people. They said it is spherical, it is round in shape. The earth rotates. No, 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 no. The earth is that same place. The sun rotates. No, no, no. Sun is same place. Earth rotates. What is all these things? It's simple. It's very simple. You will never get the credit of the things immediately. Might be in future. There might be some appreciation, but don't be sad or too happy about anything coming to our way. Alright. I'll take something. How to overcome from suppressed feelings. How much time do we have, sir? You can ask the faculty is online. The teachers which are connected to us, can you please tell us if we have time? So we can take some more questions, or else we can wind it up. No one is responding? So there is a question about how to overcome suppressed feelings. Try to find out something that gives you happiness. Feelings are something which can be dealt when you have good association. So if you have some feelings which are suppressed, try to use your see beta majorly I can say you आज के टाइम जितनी तकलीफ है वो इसीलिए है because हम अपने physically अपनी body को active नहीं रखते हैं in some social activities. Your physical health is very much interlinked to your emotions and your feelings. You go and just come for a walk. एक walk पे जाओ 20 मिनट के लिए फटाफट walk करके आ जाओ. आप अपना mood देखना. ये जितने भी questions करें ना मेरे दर्द मेरी तकलीफ सब भूल जाओगे आप automatically. It releases happy syndromes, happy hormones in your body. So if you have something that are suppressed feelings, try to generate more things with it. How to build up self-confidence? Stand before a mirror and speak to yourself. You will develop self-confidence. Face it. What about peer pressure? Don't think about it. Peers are just like you, they will pressurize. Develop your own interest. You will see that somehow or the other you will win over the battle. Yes. Use your brain in some constructive activities. Keep yourself busy. Then you will stop the habit of overthinking. Because mind is such ना एक सेकेंड आपका मन फ्री हुआ वो सोचने लगेगा कुछ ना. So इसीलिए आपको अपने मन को क्लियरली क्या करना होगा एक्टिव रखना पड़ेगा सोचने में. समझ में आया? बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सिर्फ इमोशनल हो रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने पीने पे बहुत डिपेंड करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज पे चीजें बहुत डिपेंड करता है, हमारे सोशल मीडिया जो हम देख रहे हैं और जिसका इम्प्रेशन हमारे माइंड में बैठते जा रहा है वो सब चीजों का बहुत इम्पैक्ट होता है. Okay. I like to take some other questions too from the other class. Okay. So these are the questions from SE. Yeah, beta.
I think there are two people speaking together, but I'll come back to you again. I'm talking to SE Mechanical Roll number 60. You can please repeat your question once again. I'm still in 20s only, beta. This is uh, so you can claim it as I was clear, very clear that I will always do something that gives me happiness. I will never get into something which does not give me happiness. And finding out something that gives you happiness is the biggest joy in our life. So that is a very beautiful thing that can happen. So my simple goal in life, if you ask me in one word, was to find something in my life which will give me happiness. And by God's grace, I found that. And I have been into that thing that I love for past almost like 10 years now, 10 to 11 years. Though I'm not of that big age, but I started early. So I'm very happy with that. So that I can say you very clearly that finding out what it gives you happiness is very essential. Okay. So here we can see some questions that are here. Yes, somebody else who was speaking from some other class, can you please speak up? To summarize, somebody was saying. Yes, beta. Very good. That's a very beautiful statement. You should not allow it to control you. Control you. That's very important. That's what happens when you have some expectations. You start getting into a situation of they controlling you, which is very wrong. So at this point of time, it's very very essential that we all start getting into a system that you have hopes, but don't let it become too heavy on you. And understand if things happen, it's due to God's grace. If things are not happening, that is also due to God's grace. And remember, always there is something good waiting for you. There is always something positive which is waiting for you at each and every step of life. Okay? Alright, I think so. There are many more questions that the students are coming up with, and it will go on and on and on for a long time. But yeah, I can take some other sessions too, and also we are going to start up a session on Srimad Bhagavad Gita very soon with all of you. There is a personal session also which we're going to start. I am going to personally start, and that is about with regards to youth and the Gita. Learning life lessons through the youth and Gita, and we're going to discuss about such kind of practical aspects. If you all desire, you can contact. Should I share the number? Praveen sir? Yeah. Should I share my number or how is it? They'll be contacting you? We'll send number to the teacher. So the teacher would be, your faculties would be having my number. Those kids who desire to connect themselves with Gita and get practical, it will be very simple language mein. We are going to talk to the youth of today and connect it to through Gita. So you can share these things after with your friends, and happiness also you'll be getting from within, because beta you're learning science, you're learning to live your life, but somehow you don't know how to balance your emotions, for which you need to have scriptural references. So it's more of getting a deeper understanding to who you are and what you're going to do in life. So I would request, it's free of cost, there is no charges for it. Only thing we need from you is your time. Come, give your time and learn to be a better person for yourself. Okay, it was very, very nice to speak to you. Okay, Manas, it's happy to see you all again. I can see there are many of us who know each other, and I can see lots of questions also coming up here. It's okay. We'll be discussing about them in coming sessions for sure. All right, everyone. Thank you very much. Hoping you had some learning session too. You can. Your teacher would be having my number. I'll be sharing my number with your teachers, and you can directly get connected to me through them. Okay, beta? Thank you.
Okay, I didn't introduce my name. So my name is Professor Madhuri, and my nickname is Mansi. So I'm profoundly known with both the names. So I just said both of my names. My name is Professor Madhuri Agarwal, as well as my nickname is Mansi. Okay, all right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. See you all, everyone. Bye bye. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Thank you. because हम लोग के ऊपर रेकॉर्ड नहीं होते हैं प्रियो जी बंद कर दो. एक सेकंड. Just 1 minute. Are they giving you water thing? I don't know whether these people are. हाँ हाँ. फीडबैक फॉर्म का बोल रहे How many students are there? Count दिखा आपको यहाँ पे. हैं. चलेगा. चलेगा. I'll have count because it's not very count because these people have kept lecturing today because it's not planned. कितने बच्चे थे? I'll just find out कैसे कितने नहीं. Those will count आ जाएगा. 304 से तो थी. कितनी आएगी? 3 आएगी. 250 की. So first year भी थे और second और third year भी. अभी चार्जिंग का Session is over. Thank you. Are we charging for the book? Yes, all of Who's you charging? in the meeting. Who's charging? Google Meet. No, I'll tell you. No problem. You didn't. कैमरे लो अपना. तो सुबह मेरा फोटो नहीं देखा जाएंगे. Weekend show. Ma'am, in the meeting. Vikanshu, Avni, Aman, Mohit. These are students जो लीव नहीं करते हैं, ऑप्शन नहीं रहते. हाँ बरोबर है. चालू करके छोड़ दिए प्रेजेंट तो मिल जाएगा. एक मिनट. मिला है तो काम कर लो जरा. So हाँ ये माता ऐसा है कि ये मेरा जो आईडी है ना पेड आईडी है 250 का है. ठीक है. जिसमें हम लोग एक आईडी 4000 जिसमें 250 है 100 का फ्री है. अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं गूगल मीट है तो फ्री है. 4,000 रुपीज उसका आईडी का लेते हैं मुझे महीने का. टोटल हम लोग है ना शायद हम 4,000 हम लोग 3 आईडी के देते हैं पर मंथ. नहीं अभी इसमें क्या है अगर हम 100 में करेंगे ना तो 100 में भी हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो 100 में हमको 5 आईडी ओपन करना पड़ेगा. 5-6 तो 600 पीपल कैन ज्वाइन. तो 6 अलग से लिंक देना पड़ेगा. अगर आपको 1000 स्टूडेंट ज्वाइन करवाना है तो 10 ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा. 10 ईमेल आईडी. इसलिए अभी और यहाँ पर इस पे ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है. हम लोग क्या करते हैं हमारे पास तो 2 आईडी 500 का और 100 का रहता है. आपको जूम की बात करते हैं गूगल की मीटिंग गूगल नहीं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं जैसे तुम लोग कर रहे हो ना. तो अब जैसे मैंने लोगों को बोला प्रचार करो. मेरे अंडर में जो लोग आ गए ना तो अभी मैं छुट्टी हो रही हूँ. सबको एक एक जगह का दादा बना दिया है. ऐसे करते हैं प्रचार ऐसे होता है ना. तो एक एक जगह का दादा बना दिया. तो व्हाट दे डू फर्स्ट मीटिंग में ना हम सब साथ में रहते हैं. जब मैं उनको ड्यूटीज देती हूँ ना तो आई टेल देम टू लॉग फ्रॉम 5 आईडीज 6 आईडीज 7 आईडीज. टिकट बुक कर दी. किसने आपने इतनी जल्दी यू बुक दी? प्रभु जी ने. ऐसे पूरी टिकट बुक दी बॉम्बे आ रहे. हमको बोलो कि हम नहीं आ रहे हैं हमको न जा रहे. पॉजिटिव जो ये दिस इज नॉट यार एक्सप्रेसिंग सप्रेशन है सर. लेट हिम एक्सपीरियंस. तो वाला स्कोर हाईएस्ट होता है. हाँ. तो उन्होंने वो लोग क्या करते हैं 4-5 आईडी हो गया ना तो 500 लोग ऐड हो जाते हैं. बट दैट मीटिंग गेट्स ओवर
within 40 minutes. हाँ, वो जो लिमिट होता है Zoom का, गूगल में ऐसा नहीं है। हम 40 में काम कर लेते हैं अपना। अच्छा, 40 मिनट में हमारा काम हो जाता है। मेन काम ध्यान रखने मतलब का। आपको जयराधा मत हटा देते हो, जयराधा मत प्रेयर हटा देते हो ना, तो 40 मिनट कम हो जाएगा ना। नहीं, देन हम लोग क्या करते हैं, यदि जय राधा माधव वगैरह सब करना होता है ना, तो फिर वी रिजॉइन। अच्छा, रिजॉइन। और यदि हमको जय माधव वगैरह नहीं करना होता, तब हमारा जय माधव और ये तो सब सुबह में हो जाता है। चैंटिंग सुबह, भागवतम क्लास सुबह, शाम को भी होता है। अच्छा, तो इंटरेस्टेड पीपल आर जॉइनिंग देयर, बट नाउ आई वांट टू गिव सर्विसेज टू द पीपल। तो बाकी के लोगों को कैसे पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रचार कैसे हो रहा है ऑनलाइन थ्रू। जैसे सपोज आप लोग जुड़े, तो आपको पता है कि हमारे जूम आईडी पे 500 लोग हैं। अब आप दूसरे दिन जुड़े, आप बोलोगे 300 लोग हैं। चौथे दिन जुड़े, आप बोलोगे 400 लोग हैं। फिर बोलोगे 200 लोग हो गए। अरे बोला माता जी 100 हो गए। तो उनको पता होना चाहिए ना कि वो 500 कहाँ गए। समझा? तो सेग्रीगेट कर दिया, उसके ऊपर कोई बढ़ा दिया, अच्छी बात है। ऐसी प्रीचिंग ऐसे होता है ना, जैसे आप उसको डिसेंट्रलाइज करते हो ना, अलग अलग ना पॉकेट में, फिर वो उतने लोगों को देखता है क्या है क्या नहीं, समझ। और अभी क्या है, जैसे कि मैं ऑनलाइन चिंचबड़ा एक कुछ फैमिलीज थे, तो हमने वहाँ पे उसको वीडियो बना दिया, तो वो अपडेट मिलती रहती है हमको। तो हमने क्या किया, एक को पकड़ा है वहाँ से और पूरा चिंचबावड़ी उसको दे दिया कि बस नाउ यू हैव टू एंड व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम अस, यू लेट अस नो फॉर द टीचिंग एंड अच्छा अच्छा, सो व्हाटएवर दे नीड वी सप्लाई फ्रॉम हियर। ओके, अच्छा ही है। पर ये हम लोग जो किया है ना, थोड़ा सा हेडेक है, बिकॉज़ 3 ईमेल आईडी ओपन करना। जूम अगर हमारा होता है तो एक ही आईडी होती है, एक ही कंट्रोल अब होता है। 4000 रुपए आप लोग दे रहे हो, इट इज वेस्टेज ऑफ मनी। 4000 हम लोग मंथली दे रहे हैं 3 आईडी के लिए, क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल ब्रांच है ना, हाँ, उसमें स्टूडेंट्स है ना 150 है, और हमारा जो बाकी ठीक है। तो इसलिए नहीं तो बाकी जो मैं 100। लेकिन लेक्चर तो 40 मिनट्स का ही होता है। नहीं, लेकिन उसमें अनलिमिटेड लेक्चर है, ऐसा गूगल मीट में रहता है। नहीं, गूगल मीट में दे सकते हैं अनलिमिटेड, लेकिन लेक्चर तो 40 मिनट्स का ही होता है ना जनरली। नहीं, हमारे 1 घंटे का होता है, 1 घंटे भी हो जाता है कभी भी। ऐसे इस चक्कर में हमने मैकेनिकल के लिए 3 आईडी खरीदी थी। हमारा तो जूम आईडी इतना फेमस हो गया था, जिसको भी चाहिए ना, रात को, दोपहर में, दिन में, लोगों ने बहुत आनंद लिया। हम सोचते हैं हम पैसा तो दे ही रहे, हमारे पापा क्या जा रहे हैं, तुम लोग बल्कि हम चला के बोले बस बेस्ट माता जी जूम है। जूम अगर हमारे पास ज्यादा लोग है ना 1000, हाउ डज ही गिव्स लेक्चर, मधुसूदन मिश्र को ही गिव लेक्चर थ्रू Zoom पे भी, गूगल पे भी, सब पे देते हैं मोस्टली जो। अच्छा, बस जूम पे एक्चुअली कब इनको जरा टीचर्स को मेरा नंबर ये वाला नया भेज दो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूथ प्रोग्राम। आपका टीचर ना, आपका नंबर कौन सा वाला? 885। आपके नंबर माता जी मुझे ना वो सब डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है, कौन सा नंबर किधर है। तभी तो आपने मेरे को भेजा ही नहीं ना, क्या जो आईडी भेजा ना गूगल का, वो कहाँ है? आपने उसी नंबर पे भेजा जिस पे आपने भेजा। नहीं, मैंने आपने बोला ना इनका एक और आईडी मेरे पास। हाँ। मैंने अभी ऐसा है कि अभी मैंने सेग्रीगेट किया है, मासी-माधुरी ससुराल लिखा है मैंने, मतलब सी उनका पता नहीं ना वो अदरवाइज मैं कंफ्यूज होता हूं। वहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए तो ये चैनल है अभी। अरे श्योर।